Hare Krishna, Prabhuji, Dhanot Pranam. Pranam, Ladies Prabhu, Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Our Ananda Desh is supposed to do the Kirtan. Yeah, I think Sahishnu Prabhu is here. Yeah. So unlock him and then let I him know, start. I think I could see Anant Desh also. Yeah. Rishabh Prabhu, Hari Bol. Did you tell me something? Hari Bol. Hari Bol, Rishabh Prabhu, Hare Krishna. Dhanot Pranam, beta. Pranam, hello. Jai Ho, Jai Ho. Okay. Are they not joined or they're still joined? I think Sahishnu Prabhu, Hare Krishna. Hari Bol. हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी हम लोग के पास 2-3 मिनट चाहिए प्रभु जी ओके प्रभु नो प्रॉब्लम ठीक है सॉरी प्रभु लेट हो गया एक मार
हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। आप स्टार्ट कर लीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, शुरू करेगा अभी? हाँ, बहुत लेट हो गया, चलो करो। 7-8 मिनट गया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी आप रेडी हैं?
हरे कृष्णा, खूब भालो, धन्यवाद सहिष्णु प्रभु एंड टीम।
Thank you for the wonderful Kirtan and big Hare Krishna mantra from all of us in Samadesh for all the devotees there. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare. Ananga Mohan Prabhuji, welcome. Thank you for joining. Today. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Over nearly 3 decades. And Prabhuji is a well-known preacher to our youth wing of ISKCON. He's also the ISKCON communication director. And I have seen Prabhuji getting involved with so many wonderful projects of ISKCON. One is the birthplace of Srila Prabhupada, which has now come up wonderfully. And he has been the spearheading force behind that. He also takes a lot of interest in having the wonderful Jagannath Rath Yatra in Calcutta, where he spends a lot of sleepless nights, I think, always getting things organized. I remember him being, really praised by His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj once. He said that, Ananga Mohan, you are the spirit of Calcutta Rath Yatra. I was there that time. So he's been very fortunate. So, of course, the Calcutta temple also is very actively involved. And right hand of Dayaram Prabhuji. So thank you, Prabhuji, for joining and welcoming you. A big Hare Krishna mantra for your good health. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We'll have Hemang Prabhuji, you can translate in Hindi, then Prabhuji will take over, then you can continue. Yes. Hare Krishna, तो हमारे बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पूजनीय अनंग मोहन दास प्रभु जी हमारे बीच पधारे हैं और आप जैसे जानते हैं कि ये कलकत्ता मंदिर के जो है वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और उपाध्यक्ष है मतलब, और इसके अलावा ये बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, बहुत अच्छे प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं ये पूरे ISKCON में। और इन्होंने देखा जाए तो यूथ जो प्रीचिंग है, हमारे जो युवकों को जो प्रचार करते हैं उसमें भी अग्रणी है प्रभु जी। और इसके अलावा बहुत सारी जो हमारे जो संचार विभाग है, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मंदिर संचार विभाग, प्रसारण विभाग है, जो प्रसारण विभाग के जो ये लोग संचालक भी हैं, उनको दिशा निर्देश यही करते हैं, प्रभु जी करते हैं। इसके अलावा कलकत्ता यात्रा में भी काफी इनका बहुत ही सक्रिय भाग लेते हैं। और राधा महाप्रभु जी बता रहे हैं कि परम पूजनीय भक्ति चारू स्वामी महाराज हमेशा उनको बोलते थे कि आप है ना पूरा कलकत्ता रथ यात्रा में आप इतना सक्रिय भाग लेते हैं कि आपको ऐसा लगा कि आपके बगैर रथ यात्रा में का होना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा मतलब आप सबको प्रेरित करते हैं, सबको आगे बढ़ाते हैं, सबको सेवा में जोश दिलाते हैं आप। और इसके अलावा प्रभु जी मंदिर में भी काफी अच्छा सहयोग उनका रहता है। और जो पूजनीय दयाराम प्रभु उनको काफी सहयोग करते हैं। उनके बहुत ही प्रिय ये देखा जाए तो उपाध्यक्ष मंदिर को उपाध्यक्ष है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। Over to you, Prabhuji. Hare Krishna. Okay. Thank you very much, Radha Prabhu, for allowing me to come to this program today. I was, I was physically present 2 years back on one of the Sundays there when all of you had the program in that house. Yes. December 2019. Yes. So translation needs to be there. Yes. तो बहुत धन्यवाद कि आपने हमें राधा प्रभु जी कि आपने हमको यहाँ पे आमंत्रित किया, उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं आपका। और मुझे मालूम है इसके पहले भी आपने हमको आमंत्रित किया था, आज से 2 साल पहले। तो जैसे राधा बापू ने बताया, दिसंबर 2019 में हम व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर उपस्थित थे और आपका संग हमें प्राप्त हुआ था। हरे कृष्णा। And I feel, by seeing Radha Gaur Prabhu, he seems traveling in the space and giving like mercy to all the living entities like Narad Muni. He looks like he's traveling
तो राधा महाप्रभु का जो हम उसके देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे राधा महाप्रभु है ना पूरे अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं अंतरिक्ष में और सबको कृपा बांट रहे हैं, सबका कृपा का जैसे नारद मुनि अंतरिक्ष में घूमते हुए कृपा का वितरण करते हैं सबको, वैसे राधा महाप्रभु भी हम देख रहे हैं अंतरिक्ष में घूमते हुए सबको कृपा का वितरण कर रहे हैं। All Guru's mercy. Narada means who gives Narayan to everyone. Just like Jalada means who gives water, like the cloud is called Jalad. And Narada means who gives Narayan to everyone. Haribol. तो नारद का मतलब जो नारायण सबको देते हैं, नारद, तो वैसे जलद जो सबको जल वितरण करते हैं, तो वैसे जो नारद का मतलब है जो सबको नारायण वितरण करते हैं, नारायण देते हैं। So I will request Hemanga Chaitanya Prabhu to read the text and translation of Prabhupada, and then we can discuss. Today we are discussing from second canto, first chapter, I think second canto, sixth chapter, and first sloka, the Purusha Sukta Smriti. And Okay. Sri Brahma is speaking. Vacha Brahmya Mukhyan Kshetrang Chandyasaam Shapta Dhatava Abhyakyam Anya Varang Jivhas Sarva Sarshascha. So Prabhu आप बोल सकते हैं, you can read. हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा प्रभु आप कर रहे हैं क्या, शेयर कर रहे हैं क्या हरिनाम प्रभु, कि मैं करूँ शेयर? वो शेयर कर चुके हैं। कर चुके हैं क्या? हाँ ओके ओके ठीक है, ओके, क्योंकि मैं खोल दिया था उसके पहले। ठीक है ओके। तो आज का जो स्कंद 2 से लिया गया है, स्कंद 2 जैसे हमारा चल रहा है पहले से स्कंद 2, उसमें अध्याय 6 का आरंभ किया जा रहा है आज, और उसका अध्याय का जो शीर्षक है पुरुष सुक्ति की पुष्टि, और इसका जो पहला हम श्लोक आज लिया जा रहा है। तो ब्रह्मा वाच, जैसे प्रभु ने बताया पढ़ा अभी, ब्रह्मा वाच वाचम ब्रह्म मुखम क्षेत्रम छंदसाम सप्तधातव हव्य कवय अमृत अन्नानाम जीवा सर्वरसस्य च। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद का जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मा जी ने कहा विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम बिंदु है और उसका नियामक देव अग्नि है। उनकी त्वचा तथा अन्य 6 स्तर आवरण वैदिक मंत्रों के उद्गम बिंदु हैं, और उनकी जीभ देवताओं, पितरों तथा सामान्य जनों को अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों रसों का उद्गम है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के जय, श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर भगवान के विराट रूप के ऐश्वर्यों का वर्णन हुआ है। यह कहा गया है कि उनका मुख सभी प्रकार की वाणी का उद्गम केंद्र है, और इसका अधिष्ठाता देव अग्निदेव है। उनकी त्वचा तरह शाही रचना के अन्य 6 आवरण या स्तर गायत्री जैसे 7 प्रकार के वैदिक मंत्रों के सृजन केंद्र है। गायत्री समस्त मंत्रों का शुभारंभ है, और श्रीमद् भागवत के प्रथम खंड में इसकी व्याख्या हुई है। क्योंकि जितने जनन केंद्र है वे भगवान के विराट रूप के विभिन्न अंग है, और चूंकि भगवान का रूप भौतिक सृष्टि से परे है, अतएव यह समझना चाहिए कि वाणी, जीभ, त्वचा आदि से यह बोध होता है कि भगवान का देह रूप इनसे रहित नहीं होता। भौतिक वाणी या भोजन ग्रहण करने की शक्ति मूलतः भगवान से उत्पन्न होती है। ऐसी क्रियाएं मूल आकारों के विकृत प्रतिबिंब है। देव अवस्था भी आध्यात्मिक विविधता से रहित नहीं होती। आध्यात्मिक जगत में भौतिक विविधता के विकृत स्वरूप अपने दिव्य मूल स्वरूप से पूरी तरह दिखते हैं। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों से कलुषित हो जाते हैं, जबकि आध्यात्मिक जगत में सारी शक्तियां शुद्ध होती है, क्योंकि वे भगवान की अन्य दिव्य भक्ति में लगी रहती है। आध्यात्मिक जगत में भगवान प्रत्येक वस्तु के भव्य भोक्ता है, और सारे जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के कलमश से रहित भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं। आध्यात्मिक जगत के कार्यकलाप
भौतिक जगत के किसी भी उन्माद से रहित होते हैं, किंतु आध्यात्मिक पथ पर निर्विशेषवादी जिस निर्विशेष शून्यता की बात करते हैं वहां वह नहीं पाई जाती। नारद पंचरात्रा में भक्ति में सेवा की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्तवे निर्मलम ऋषिकेश ऋषिकेश केश सेवनम भक्ति उच्चते। क्योंकि मूलतः सारी इंद्रियां भगवान के इंद्रिय आगार से उत्पन्न होती है, अतएव भौतिक जगत के कामोदीपक कार्यों को भक्ति की विधि से शुद्ध करना होता है, और इस तरह हम अपने भौतिक कार्यों की वर्तमान अवस्था को शुद्ध करके जीवन की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। शुद्धिकरण की यह प्रक्रिया विभिन्न उपाधियों की धारणा से मुक्त होने की अवस्था से प्रारंभ होती है। प्रत्येक जीव किसी न किसी सेवा में लगा है, चाहे वह अपनी सेवा हो या अपने परिवार की, समाज या देश की सेवा हो, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी सारी सेवाएं भौतिक आसक्ति के कारण ही संपन्न की जाती है। भौतिक आसक्तियों को मात्र भगवान की सेवा में बदल देना चाहिए, और इस प्रकार भौतिक आसक्ति से मुक्त होने का उपचार स्वतः ही प्रारंभ हो जाता है। इस तरह मुक्ति की विधि अन्य सभी विधियों की अपेक्षा भक्ति में सेवा के माध्यम से सरल है, क्योंकि भगवद गीता 12वें अध्याय 5वें श्लोक में कहा गया है कि यदि कोई निर्वेश रूप से आसक्त होता है तो उसे नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। क्लेशो अधिकारतस्ते अव्यक्ता चेतसाम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमयो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कंत राधा कंत नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदिनतारे। हरे कृष्णा। So very क्या what do you say, welcome to all of you. Very happy good morning, auspicious holy day. Sunday is a holy day. Prabhupada used to say it's not a holiday, it's a holy day. तो सबका आपका स्वागत है, सबको शुभ शुभ सवेरा। और सब जैसे शिला प्रभुपाद कहते थे कि ये है ना रविवार है, जिसको इंग्लिश में बोलते संडे हॉलीडे बोलते हैं ये लोग, लेकिन एक्चुअल जो संडे वो हॉलीडे है, वो पवित्र दिन है, ये शुभ दिन है सब भक्तों के लिए। And I am talking to all of you from a very sacred place. और मैं ना आपको जो यहाँ से जो संबोधन कर रहा हूँ वो बहुत ही पवित्र स्थल से मैं संबोधित कर रहा हूँ आपको। The place where Srila Prabhupada 100 years back met Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. I am sitting in that place of One Untalanga Junction Road and speaking to all of you. तो आज से 1922 मतलब आज से 100 साल पहले जब श्रील प्रभुपाद जी से मिले थे,
श्रील भक्ति ठाकुर उनके जो गुरु उनसे मिले थे, तो ये वही शुभ पवित्र स्थल है जहाँ पे मैं अभी बैठ के संबोधन कर रहा हूँ, आज का प्रवचन दे रहा हूँ। और ये उल्टा डंगा रोड जो है कलकत्ता में, वही स्थल है, वहीं पे बैठा हूँ आज। And this is not a coincidence that we are talking today about Brahma and who is our Sampradaya Acharya. तो ये कहा जा रही है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम इसको ऐसा कुछ मिला है, लेकिन कि भाई ऐसा कि ब्रह्मा जी जो हमारे संप्रदाय का आचार्य, उनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। So my prayers for all of you from the holy land of Kolkata, the birthplace of Calcutta, and my prayers from the Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's first temple, the birthplace of ISKCON. जय हरि हरि। तो मेरा जितने भी प्रार्थना है आप सभी लोगों के, मैं यहाँ इस स्थान पे श्रील भक्ति साहब ठाकुर कर रहा हूँ, जो उनका सबसे पहला समझ लिए हमारा मंदिर ISKCON का, जहाँ पे जो उनको श्रील प्रभुपाद से मिले, उनको उन्होंने निर्देश दिए थे। Everything is happening in Shyam Des, in Balaram Des, and so many places because of this place from where I'm sitting and giving you the talk. तो जो भी कुछ हो रहा है श्याम देश में, बलराम देश में, दामोदर देश में, जो भी कुछ हो रहा है वो सब इस जगह के कारण ही हो रहा है जहाँ आज मैं बैठ के आपको संबोधन कर रहा हूँ। It's a very significant talk that Brahmaji is speaking to all of us. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आज जो चर्चा है वो की जा रही है, जो कि ब्रह्मा जी हमसे नारद मुनि से कर रहे हैं और हम उनको श्रवण कर रहे हैं उसका। It is very significant for all of us to understand every word of Srimad Bhagavatam in a perspective of the Acharyas. तो हम जो श्रीमद् भागवतम का जो प्रत्येक शब्द है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आचार्य लोगों की दृष्टि से भी। Because what we learn from these, what they are teaching us by their, words from Srimad Bhagavatam is actually the source of inspiration for all of us who are practicing Krishna consciousness in our life. इसलिए देखा जाए तो उनके जो भी शब्द हैं, एक एक शब्द जो हमारे प्रेरणा के स्रोत है, जो आचार्यों की जो शब्द है वो हमारे प्रेरणा के स्रोत है, क्योंकि ये हम श्रीमद् भागवतम ये हमारे जीवन का, हमें आगे कैसे हमें भक्ति जीवन में आगे बढ़ने का उसके लिए प्रेरणा देता है। And because of Srila Prabhupada's mercy, we got Prabhupada's purports, which is just like Sone Pe Suhaga. It has become auspicious and wonderful. श्रील प्रभुपाद की कृपा के कारण ही हमें ये तात्पर्य हमें प्राप्त हुए हैं, और ये सोने में सुहागा का काम करते हैं। आपको जैसे ज्ञात है कि हम कितना उसमें हम लोगों का साक्षात्कार होता है तात्पर्य को अध्ययन करने से। Prabhupada has made all these purports so beautifully that we can understand the mood of the speaker through his purports. इसलिए बहुत ही इतना खूबसूरत, इतने सुंदर तरीके से प्रभुपाद ने इसको प्रस्तुत किया है, ये जितने भी जो तात्पर्यों को, कि हम उसको बहुत अच्छे ढंग से उसका आनंद ले सकते हैं, उसका अपने जीवन में उसको उतार के उसका साक्षात्कार कर सकते हैं, हम गहराई तक। That is the reason Prabhupada used to say that my purports are my devotional ecstasies. इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि मेरा जो तात्पर्य है वो सब हमारे भक्ति का जो भाव विभोर का जो भाव है वो मेरा भाव है, भक्ति में भाव विभोर हो जाने का जो भाव है वो है। So I have decided to discuss about this topic in 3 steps. तो मैं ये जो विषय है इसको मैं 3 जो स्तर पे इसका मैं चर्चा करना का प्रयास करूंगा। First is Brahma ji is speaking this because he understood that he did a mistake in Brahma Vimohan Lila. तो यहाँ पे जो ब्रह्मा जी यहाँ पे जो बता रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि उनको ये ऑलरेडी अंदर से उनको साक्षात्कार हुआ, अनुभव हो चुका है कि उन्होंने ऑलरेडी ब्रह्म विमोहन लीला में वो अपराध हो चुका है उनके द्वारा। And that is the quality of this material world. Whenever we create something, whenever we do something, we become proud, and that makes us
very much away from the real Krishna consciousness mode. तो इसलिए एक्चुअली देखा जाए तो हमें जो कृष्ण भावना मृत का जो भाव है उससे हमें ये दूर लेके जाते हैं हमको। अगर ये हमारा अगर ये भाव होता है जैसे ब्रह्मा जी बता रहे हैं, हमें अगर कोई अपराध का भाव होता है तो हमें दूर लेके जाते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहमिति मन्यते. Because of this, nature of this material world, a person, they feel that they are the doers. क्योंकि ये भौतिक जगत का प्रकृति ऐसा, स्वभाव ही ऐसा है कि इसके संपर्क में जो भी आता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे जो भी कुछ कर रहा है वो खुद ही स्वयं ही कर रहा है। So the example is Brahma himself. He never understood his Lord, and he took away all Krishna's friends. तो यहाँ पे जो ब्रह्मा जी को भी ये भौतिक जो प्रकृति के प्रभाव में आके उनको भी ऐसा लगने लगा कि मैं कर रहा हूँ जो भी कुछ, इसलिए उन्होंने इस प्रभाव में आके उन्होंने जो कृष्णा के जितने भी जो ग्वाल बाले थे, जो सखा थे, उनको उन्होंने वहां से हरण कर दिया उनका। And there later part he repented. And he repented. उनको अफसोस हुआ। उसके बाद पश्चाताप हुआ उनको बहुत। So this is the first thing we all have to understand. Whenever we achieve something, we should not be proud. We should give that credit to Guru, Vaishnavas, Hari Guru and Vaishnavas. इसलिए हमें कभी भी जब कोई हमें उपलब्धि हासिल करते हैं तो हम कभी भी जो उपलब्धि का जो श्रेय है वैसे हमें गुरु और हरि गुरु वैष्णव इन सबको देना चाहिए, गुरु और कृष्ण को देना चाहिए, इसका जो श्रेय है। And then we will be saved from the illusion of these three material nature. The gunas, what do you call that? Triguna, that very beautifully Krishna says in Bhagavad Gita that urdham gacchati sattvata madhya tishtha rajasad vaganna guna vrittasya ajo gachanti tamasa. Because of these three gunas of this material world, three modes of material nature, this problem occurs in one person's mind. इसलिए क्योंकि ये प्रकृति के तीन से भगवद गीता में कृष्ण ने बताया कि तीन प्रकृति के तीन गुणों के कारण ही जो व्यक्ति कोई भी जो कार्य करता है, जो कर्म करता है, वो या कुछ भी जो उपलब्धि हासिल करता है वो खुद को उसका कर्ता मान बैठता है। ये भगवद गीता में भी कृष्ण ने बताया तीन गुणों के प्रभाव में आके वो ऐसा सोचने लगता है। ऐसा Even if you see, even if we do a little bit, whether it is cooking, whether it is singing, and in today's world there are so many ways that you can become proud. तो इसलिए आप देख सकते हैं कभी अभी हम अगर कोई भी सेवा करते हैं, हो सकता है रसोई बनाने की सेवा करते हैं या कोई गाने की सेवा करते हैं, कोई भी सेवा करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस अभी जगत में, इस दुनिया में कैसे हो रहा है कि लोग उसको तुरंत ही उनमें अहंकार आ जाता है, अपने वो मैं किया, मैंने, इसके लिए उनको ऐसा लगता है। And this material world is teaching us you are the best. और ये भौतिक जगत हमें हमेशा ये शिक्षा देता रहता है कि आप सबसे अच्छे हो। You see YouTube channels, YouTube post, then Twitter, everybody feels I am the best. इसलिए आप देखेंगे जितने भी फेसबुक में, ट्विटर वगैरह में आप देखेंगे, उससे आपको मालूम पड़ेगा कि हर उसको लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं महान हूँ, मैं बहुत कुछ किया और मैं कर रहा हूँ बहुत कुछ। That is the reason the second discussion is today, that we need to understand our position and always make ourselves remember the supremacy of the Lord. तो इसलिए हमें कभी भी जो भी कुछ कर रहे हैं वो उसमें हमेशा ये अनुभव होना चाहिए और कि नहीं, जो भी कुछ है वो भगवान हमसे करवा रहा है और वही कर रहा है, जो भी कुछ कर सकता है वही है, सिर्फ जस्ट वो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, हमको वो हमारा नाम हो जाता है, वो प्रेरणा हमारी बढ़ाने के लिए। We should understand the driver is, the father is the driver, the baby is sitting just holding the steering. He is not actually running. That we need to all understand. तो हमें ये उदाहरण से समझना चाहिए कि जैसे कार जब चला रहे हैं तो छोटा सा बच्चा है ना, वो कार का जो स्टीयरिंग है वो पकड़ा हुआ है, तो बच्चे को ऐसा लगता है मैं चला रहा हूँ, लेकिन देखा जाए उसका पिताजी वो चला रहा है, वो पीछे वो सीट पे बैठ के और स्टीयरिंग को वो पकड़े हुए हैं, और छोटे बच्चे को लगता है मैं चला रहा हूँ, जबकि चला रहे हैं उसके पिताजी चला रहे हैं गाड़ी।
So every single day we need to understand Mukham Karuti Vasalam Pangum Langayati Grim Jaskripa Tamaham Mande Paramananda Madhava. This shloka need to be remembered every day that we are not the doer, the Lord is the ultimate doer. इसलिए हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जितने भी जो हम अनुभव लेते हैं उससे कि जो भी कुछ करता है करने वाला वो भगवान ही कर रहा है, जस्ट हमको एक उसका माध्यम बनाते हैं वो और हमसे कुछ करवा देते हैं सेवा. So that is the reason why Brahmaji is personally speaking in this song of his that how great the Lord is, and by discussing about the Lord's greatness, he is understanding his position and becoming humble. तो इसलिए यहाँ पे भी जो हमेशा जो ब्रह्मा जी जैसे कि उसका जो उनकी क्या अवस्था है, क्या स्थिति है, उसको है ना समझने का प्रयास करते हैं और बाद में उनको समझ में आ जाता है कि उनका एक्चुअली उन्होंने जो भी कुछ किया है वो सही नहीं था. जो भी मैं सृष्टि की रचना कर रहा हूँ वो एक्चुअली उनके द्वारा ही की जा रही है. मैं जस्ट एक माध्यम बना हूँ, उनके हाथ में एक औजार बना हूँ मैं. Sometimes in our Krishna conscious life, when we become also very senior, very, what do you call, seniority in regard of age, seniority in regard of the time that I have joined, and we feel that I have got the spiritual, life, and I am doing so many years in this movement, and I don't need anybody's help. इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है जब हम वरिष्ठता प्राप्त कर लेते हैं, वो शायद वो उम्र में वरिष्ठता हो या हमारी कोई सेवा में वरिष्ठता हो या हमारे जो कितना समय हमने इस आंदोलन में व्यतीत किया सेवा में, वो तो वरिष्ठता के कारण कभी कभी हमें ये लगने लगता है कि मैं तो बहुत वरिष्ठ हो गया, मुझे सब मालूम है, अब मुझे किसी का भी मार्गदर्शन की या किसी के भी जो निर्देश है उसकी आवश्यकता नहीं है, मैं खुद ही कर लूंगा सब कुछ. And that is the time one person is in a high risk zone, because nobody is there, everybody is junior than him, and nobody is there to talk to him, and his condition becomes like Brahma. तो इसलिए देखा जाए तो वो भी है ना, जब ये सोचने लगता है कि नहीं मैं जो भी कुछ किया है ऐसा मैं कर रहा हूँ, मुझे किसी के निर्देश की आवश्यकता नहीं है, किसी का भी हमें गाइडेंस नहीं चाहिए, तो उस टाइम में ब्रह्मा जी का जो पोजीशन हुआ जैसे वही बहुत ज्यादा खतरनाक ये अवस्था में आ जाता है, वो कभी भी वहां से उसको नीचे गिरने का चांस हो जाता है, उसका अवसर हो जाता है उसको. So that's why the third discussion is very important, that how always we try our level best to be humble and understand our position as the servant of Krishna, Jiver Swarifai Krishna Das, Nitya Das, and understand the shloka which Srila Prabhupada is writing here in the purport. इसलिए हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम जैसे यहाँ पे श्लोक में तात्पर्य प्रपात लिखा है कि हमारी स्थिति को हमेशा हमें उसके लिए सावधान रहना चाहिए कि हमारा जो स्थिति वो सिर्फ एक ही है कि हम है ना कृष्ण के सेवक हैं, हमारा सिर्फ एक हम सेवक ही और कुछ नहीं है. ये सिर्फ हमारे हमेशा मन में ये बहुत मजबूत तरीके से बिठा देना चाहिए कि मैं जस्ट एक सेवक हूँ मैं. तो जैसे श्री प्रभुपाद ने हमें बताया है कि हमें क्या करना चाहिए उसके लिए, ताकि हमें कभी भी अहंकार नहीं आ पाए हमें. That's why Prabhupada mentions a very beautiful slok here. Sarva upadhi nirmuktam tatparatera nirmalam rishikena rishikesha sevanam bhaktir uchyate. As Mahaprabhu is saying, na ham vipro, na nrapati, na shudro, na brahmano. And what Mahaprabhu is saying, Gopir Bharatul Padakamlar, das, 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 das. I just want to be the servant of the servant of the servant of the gopis of Vrindavan. I'm not a brahmana, I'm not a king, I'm not a shudra. I don't have any post and positions. I'm just Krishna's servant. यहाँ पे भी जैसे बता रहे कि हम इसलिए जैसे चैत्र महापुर बनाया, फिर श्रील प्रभुपाद ने बताया कि हम जितनी भी उपाधि है ना उससे हमें मुक्त होना चाहिए. सिर्फ हमें एक ही, जैसे चैत्र महापुर बताया कि गोपी भरत हो पद कमलो दासानु दासानु दास, तो हमें गोपी के जो सेवक है उनके सेवकों, उनके दास है, दासों के दासों के दासों के दास, ये हमारी जो अवस्था को हमेशा याद रखेंगे तो हम कभी भी हमें अहंकार में नहीं आएंगे और हमेशा हम भक्ति में उन्नति करते रहेंगे.
And that is the reason, my dear Prabhus and mothers and my god brothers and god sisters, Brahma comes in Chaitanya Lila as Haridas Thakur. तो मेरे जितने प्रभु हैं और जितने भी यहाँ पे उपस्थित मेरे माता जी हैं, प्रभु है, जो भी है, तो वो सब में आपको ज्ञाति है कि चैत्र लीला में यही ब्रह्मा जी हैं, वो हरिदास ठाकुर के रूप में अवतरित होते हैं वो। And when he comes in the form of Haridas Thakur, he is the epitome of Trinadati Sunichena Taror Eva Sahishnana Amanina Manadina Kirtaniya Sadahari. He is following this principle of Sikshashtakam so beautifully because he already understood that he did something. He doesn't want to repeat it again. तो इसलिए जब ये आते हैं, जब हरिदास ठाकुर शीलादास ठाकुर के रूप में आते हैं, तो ये सबके लिए दिखाते हैं अपने उदाहरण के द्वारा। जो श्लोक है तृणापि सुनिश्चना तरोपि सहिष्णुना अमान मानदिना की तरह, वो अपने उदाहरण के द्वारा सबको प्रस्तुत करते हैं, अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि कैसे हमें जिनके से ज्यादा नंबर होना चाहिए, वैसे ज्यादा स्थानशील होना चाहिए और किसी से मान की अपेक्षा नहीं करें, सबको मान देते रहना चाहिए। तो ये हमेशा हम लोगों को भी ये ध्यान में रखना है, जैसे यहाँ पे ब्रह्मा जी सबने उदाहरण के द्वारा शीलादास ठाकुर के रूप में सबको बता रहे हैं। So there might be some sound because at the downstairs some Bengali drums are being played. So, but can you hear me? Yes. We can hear clearly. Okay, that's good. Thank you. So this is very important for all of us to understand in our spiritual life also. If we are having many devotees whom we can associate with and whom we can talk about Krishna and they can take care of us, we will be in a safe place. तो इसलिए हम भी जब भक्तों के संग में होते हैं, हम उन भक्तों का संग हमें करना चाहिए ताकि जो हमें हमारे साथ बैठ के कृष्ण कथा चर्चा कर सके और हमें कुछ निर्देश दे सके कि हम भक्ति में कैसे आगे बढ़े। ऐसे हम भक्तों के बीच में हमेशा अगर संग करेंगे, उनके साथ उठेंगे बैठेंगे, तो हम लोग हमेशा भक्ति में सुरक्षित स्थल पर रहेंगे, हमेशा माया से दूर रहेंगे। So that is the reason the Bhaktivinoda Thakur, he says, Ashray loya bhadi Krishna tare nahi taje. Whenever we are taking shelter in the devotee's lotus feet, then you will be very much saved in Krishna consciousness. इसलिए भक्ति ठाकुर ने बताया है कि जैसे हम किसी भक्त का हम जब आश्रय लेते हैं, जो गंभीर भक्त हैं, तो हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे कृष्ण भावनामृत में, कभी भी हमें खतरा नहीं होगा नीचे गिरने का। So that is the reason why Sri Chaitanya Mahaprabhu also says that more bhakto na puje more puje matro dambhik she na hoy more kripar patro. So Sri Chaitanya Mahaprabhu says he is Krishna himself and he is telling us the principles of Krishna consciousness. That if one person is worshipping me, he is not my devotee. But the person who is worshipping my devotees, they are actually the followers of mine. They are actually the lovers of Krishna. So if we want to love Mahaprabhu, we have to love and take shelter under the lotus feet of Mahaprabhu's devotees. जैसे यहाँ पे जैसे कि बताया है, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भी कि भाई अगर जो मेरी शरण लेता है कि और उससे मेरी पूजा करता है लेकिन मेरे भक्तों की पूजा नहीं करता है, तो वो सही नहीं है। एक्चुअली जो मेरे को अगर पूजा करता है, इसका मतलब वो मेरे भक्तों का भी पूजा, उनका भी सम्मान करें, उनकी भी सेवा करना चाहिए। तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि चैतन्य महाप्रभु खुद बता रहे हैं कि हमेशा भक्तों का, हमें जो चैतन्य महाप्रभु के जो प्रिय है भक्त हैं, उनका हमें चरणों का आश्रय लेके उनके चरणों के आश्रय में ही हमेशा रहना चाहिए, तो हम बच जाएंगे और सुरक्षित रहेंगे हम हमेशा भक्ति में। So the example has been given by Chota Haridas and Krishna Das. Both of them did the same mistake, but the punishment was different. तो यहाँ पे जैसे हमें एक उदाहरण आपसे मिलता है जैसे कि जो छोटा हरिदास और कृष्णा दास, काला कृष्णदास दोनों का है ना, देखा जाए तो दोनों का सेम ही उदाहरण है, लेकिन उसमें दोनों का जो उनका जो देखा जाए तो पनिशमेंट, मतलब जो सजा है उनका जो दंड है वो लेकिन अलग अलग था दोनों का, काला कृष्णदास का और छोटा हरिदास का, दोनों का दंड लेकिन अलग अलग था। Kala Krishnadas apparently did more
what do you call, deep offense than Chota Haridas. But Mahaprabhu rejected Chota Haridas. But Kala Krishnadas was the associate of Nityananda Prabhu. Some or other Mahaprabhu tolerated and gave him service. तो यहाँ पे देखा जाए तो काला कृष्ण दास का जो दंड है वो देखा जाए छोटा हरिदास के तुलना में कम था, क्योंकि उनको क्यों कम था, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के काफी अच्छी सेवा करते थे, उनके अच्छे सेवक थे, तो इसलिए उनको अवसर दिया चैतन्य महाप्रभु ने कि अपने सुधार करने का ज्यादा अवसर उनको प्रदान किया ताकि वो सही मार्ग में आ जाए. Sometimes we feel, I have personally seen in my 20 to 22 years and whatever sadhana, whatever services and whatever association and readings, whatever realizations, little bit I am having. And with humility, I am saying that I see that, sometimes the newcomers, after some time, feel that they know everything. तो इसके लिए मेरा जो अनुभव है, ये व्यक्तिगत अनुभव है, 20-22 साल का जो मेरा जो ये कार्यकाल हो गया मेरे को इस आंदोलन में, तो मैं बहुत ही नम्रता से आपको बता रहा हूँ मेरा जो अनुभव, कि कभी कभी कुछ ऐसे जो नए नए आते हैं भक्त, और कुछ समय के बाद उनको लगता है कि अभी वो सब कुछ जानते हैं, उनको किसी से कुछ जानने की कोई आवश्यकता नहीं, वो सब जानते हैं, किसी के I don't want to discourage anyone, or I don't want to offend anyone. This is my realization that I am saying. तो मैं किसी के प्रति अपराध नहीं कर रहा हूँ या किसी को मैं उसका निंदा नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा जो व्यक्तिगत रूप से जो मैंने अनुभव किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ. Sometimes we see that the seniors are also singing. I am also singing. I can now play harmonium. I can also give class. So what's the problem? I can do it. It's okay. Bye bye. इसलिए वो हमें ऐसा फिर महसूस लगा हम भी मेहनत अच्छा दे सकते हैं, हम भी प्रवचन कर सकते हैं, हम भी जो जितने भी सेवा बाकी लोग कर रहे हैं तो हम भी सेवा कर सकते हैं. इसमें क्या है, क्लास देना, हमको प्रवचन करना, और क्या करना, हमको उससे कौन सी बड़ी बात है. But we forget one thing. But we forget one simple thing, that if I am now, in Krishna consciousness for 5 years, now my seniors or the Vaishnavas and Vaishnavis, they have now 10 years. If I am 10 years, they are now in 15 years ahead than me. So I cannot catch them because their dedication is different and they are senior, they will be always senior. तो इसलिए कभी मान लो किसी भक्त को 5 वर्ष हो गया तो उसको ऐसा नहीं, ये भी उसको ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आपको सिर्फ 5 साल हुए और फिर भी आपको इतना सब कुछ मालूम है, लेकिन जो बाकी जो आपसे वरिष्ठ भक्त उनको 10 साल हो गए, 15 साल, 20 साल, तो जरूर ये आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि वो मेरे से श्रेष्ठ है और मेरे से ज्यादा जानते हैं और मेरे से ज्यादा अनुभव उनको भक्ति के बारे में ज्यादा. In this way, if we have a very nice attitude towards seniors of respect and love towards equals and compassion towards juniors, our devotional life will be flourished and our society as a family will grow very beautifully. तो जैसे यहाँ पे बताया कि नादमणि का भी जो इंस्ट्रक्शन जो है निर्देश उसके हिसाब से भी, तो भाई कैसे जो हमारे जो वरिष्ठ है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, हमें उनकी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, और जो हमारे बराबरी है भक्ति में, हमारे बराबरी की वजह से मित्रता का व्यवहार करना चाहिए. जो हमारे भक्ति में हमसे नीचे हैं, जो अभी सम्मिलित हुए हैं, हमें उनके प्रति प्रेम और करुणा को दर्शाना चाहिए. However, at any cost, we should not think that I am the doer. Yes, I can request for blessings. I can tell that I am trying my level best. And then in this way, if you are humble, then Krishna will be very happy with us. इसलिए हमेशा हमें ये हम्बल रहना चाहिए कि हमें ना, चलो मैं भले कितना भी हमें समय हो गया, कुछ भी हो गया हो, कितना भी कार्यकाल 3 वर्ष हो गया, लेकिन हमेशा ये रहना चाहिए मैं है ना, ये उनकी कृपा है, क्योंकि कृपा के कारण मैं लगा हुआ हूँ. तो हमें हमेशा भगवान को बोलना चाहिए आपकी हेतु की कृपा के कारण ही मैं ये सब सेवाएं कर पा रहा हूँ. ऐसा करके हम हमेशा जो हम्बल रहना, नम्र रहना चाहिए हमेशा. So from the land of Bhakti Vinod Asan, the Ultadanga Junction Road, I will recite one shloka which was being narrated by Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. तो मैं उल्टा डंगा रोड से हम बैठा हुआ मैं एक श्लोक मैंने अभी बोलूंगा जो श्रील भक्ति ठाकुर ने इसको बोला था.
So every day, early morning, when he will get up, he will recite this shloka, which was created by him. तो इसलिए जैसे वो सवेरे उठते थे तो ये वाला श्लोक जो उन्होंने खुद ने इसकी रचना की थी वो उसको जरूर गाते हैं सवेरे उठते से। If you so desire, you can also repeat after me. अगर आपकी इच्छा है तो मेरे साथ साथ उसको आप दोहराइए। This is a very beautiful slok written by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur personally. ये जो श्लोक है बहुत ही खूबसूरत है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने व्यक्तिगत रूप से ही लिखा है ये श्लोक। ज्ञानात् अवलंबिका केचित् केचित् कर्म अवलंबिका। Okay, slowly. ज्ञानात् अवलंबिका केचित् ज्ञान अवलंबिका केचित् केचित् कर्म अवलंबिका केचित् कर्म अवलंबिका वायम तु हरिदासानां वायम तु हरिदासानां पादत्राण अवलंबकम। पादत्राणम अवलंबकम। Very beautiful shloka. He is always get up in the morning and he will recite this first. तो ये बहुत ही खूबसूरत श्लोक है और जैसे वो सवेरे उठते थे तो वो पहले पहले इसका उच्चारण करती है श्लोक का। And the meaning of this shloka is for some people, they take avalambakam means a creeper takes a help of a strong stick to climb. So that is called avalamban. So for somebody's life, the holding thing is karma. They hold karma and go ahead in their life. Someone, they hold jnana and go ahead in their life. But for me, my holding power is the shoes of the Vaishnavas. इसलिए यहाँ पे जो अवलंबन का ये अर्थ यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे हमारा चढ़ना ऊपर उसका उन्नति करना। तो जैसे कुछ लोग है ना कर्म के द्वारा जो है ना वो अपना इसका कुछ आगे बढ़ने का प्रयास में जीवन निकालते हैं, कुछ ज्ञान के द्वारा। लेकिन जो भक्ति ठाकुर ने कहा मेरा तो सिर्फ जो वैष्णव के जो चरण में जो जूते वो पहनते हैं वो जूते जो वैष्णव के हैं वो वही मेरा जो है ना ऊपर भक्ति में ऊपर उठने का वही एकमात्र मेरे लिए साधन है। He is not saying the lotus feet of Vaishnavas. He is saying pada trana. Pada means lotus feet and trana means who gives tran. You know, when you are walking in the hot summer, just like Navati Mandal Parikrama started today, those who are walking, if they are wearing shoes, it will be trana. For them, it will be a little pleasurable. So that is called pada trana is the shoes of the Vaishnavas are my shelter. इसलिए जैसे कि आप देखते हैं कि जब कोई धूप में जब चलता है, खासकर आजकल जैसे गर्मी आरंभ हो गया, जैसे परिक्रमा भी आरंभ हो गया आज मायापुर में, तो जब कुछ लोग हैं बगैर चप्पल के चलते हैं, लेकिन कुछ लोग चप्पल के चल रहे हैं, चप्पल पहन के, तो चप्पल पहन के चल वाले को थोड़ा सा उनको ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं वो जिनके चप्पल नहीं पहने उनकी तुलना में। So that is the reason it is very important for all of us to be in association of devotees. तो इसलिए always get checked whether I am doing it for the pleasure of Sri Guru Vaishnavas or not. And in this way, if we go ahead in our spiritual life, we will be safe, we will be happy, and we will be protected. तो इसलिए भी हम भी अगर ये अपने आप को स्वच्छ रखना चाहते हैं तो हमें भी ये जो जैसे बताया कि वो जो वैष्णव के जो पाद तरण है उनका हमें सहारा लेंगे तो हमेशा हम सुरक्षित रहेंगे, हमेशा बचे रहेंगे माया और हमेशा उन्नति करते रहेंगे। The hierarchy of this material world is like this. One person is at the top. The hierarchy of the Vaishnavas are like this. I am at the bottom and everybody is up. अरे वो तो जो भौतिक जगत में ऐसा लगता है कि मैं सबसे ऊपर हूँ, लेकिन जो वैष्णव के समाज में मैं सबसे नीचे हूँ, बाकी सब ऊपर है मेरे से। More lotus feet you get to touch and take dust, your head becomes auspicious. तो जितना ज्यादा हम जो है ना चरण धूलि लेंगे वैष्णव का, उतना हमारा जो सर है वो शुभ रहेगा उसमें। So that is the reason it has been stated. Tadero charono sevi bhakto shone baas, janome janame hai ei abhilash.
I just want to serve the lotus feet of the 6 Goswamis. And life after life, I just want to be in their association. तो इसमें मैं जो 6 गोस्वामी के चरणों की हमेशा सेवा में लीन होना चाहता हूँ, उनके चरणों की सेवा में, और हर जन्म में मैं सभी वैष्णव का सेवा में लगा रहना चाहता हूँ, वैष्णव के चरणों की सेवा। So I end here today. If you have any questions, you can ask me. तो किसी को कुछ प्रश्न हो कृपया करके पूछिए। We have 10 minutes to go, and let us have some question answers. Very good. If you have. You can take it longer, huh? There's no restriction. हरे कृष्ण। No, with question answer, we can take. Yeah. Okay. हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण। Unless we have some commitment. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। No, it's okay. I am committed to you for today. No, thank you so much for your mercy. हरे कृष्ण प्रभु, आपके चरणों में मेरा दंड प्रणाम। पहले आपके बहुत अच्छा, आपने खूबसूरत क्लास दिया। ऐसा लगता है कि जैसे कोई, क्योंकि जैसे हम लोग कांग्रीगेशन मेंबर्स हैं और हम लोगों ने यहाँ पे जब आए हैं तो यहाँ पे आपको जो मंदिर में हमको अभी इधर कुछ समय के लिए यहाँ रहना पड़ रहा है, तो हमें मंदिर में सेवा करनी पड़ती है। तो आपका ये तो आज हमारे लिए अमृत जैसा जैसे बरसा रहे हैं आप हमारे ऊपर, व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये तो सही बात है। लेकिन प्रभु ऐसा भी तो होता है कि जैसे कभी कभी हम लोगों को जैसे खास कर स्पेशली जो जब हम मंदिर में जब जाते हैं तो उसमें जिसके पास जैसे पोजीशन और पोस्ट है जिसके पास, तो उसका आपको उसकी चलती है, वो जैसा बोलेगा वही होगा। भले ही वो अभी नया क्यों नहीं ज्वाइन किया हो, मतलब मंदिर में नया क्यों नहीं, अभी नया छोकरा क्यों नहीं हुआ, अभी नया अभी जस्ट आया वो, है ना, उसकी उम्र भी मुश्किल से 25 साल होगी, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी ये होता है कि उनकी पोजीशन के कारण वो अभी तो 25 साल का ही है, तो लेकिन जो कुछ भक्त होता है वो तो अभी तो उसको 30 साल 25 साल तो उसको भक्ति में हो गए, मतलब पैदा भी तब से उससे भक्ति आरंभ की है। लेकिन उसके साथ ये जो वरिष्ठ भक्त उसके साथ जब हम्बल हो जाता है तो वो अपने आप को ऐसा समझने लगता है कि जैसे कि अरे ये तो फालतू आदमी है, बेवकूफ आदमी है, तो उसको बार बार अपमानित करता रहता है वो उसकी पोजीशन के कारण। तो उस केस में उसको बार बार वो अपमानित कर रहा है उसको, मतलब वो हम्बल है उसके साथ, ऐसा नहीं कि वरिष्ठ भक्त उसको कोई उल्टा सीधा बात करे, लेकिन उसकी पोजीशन के कारण वो बार बार उसको अगर अपमानित करे या बार बार उसको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, तो क्योंकि उसके बाद पोजीशन पोस्ट तो है ही नहीं, जो वरिष्ठ भक्त उसका पोजीशन पोस्ट नहीं है, लेकिन ये जो भक्त को पोजीशन पोस्ट मिल गई वहां पे मंदिर में, लेकिन तो इसलिए वो हिंदी में उत्तर दूं या इंग्लिश में उत्तर दूं? हाँ, हिंदी में उत्तर दीजिए। तो प्रभु, जैसे मैं कहा, अगर किसी को पोस्ट मिला है उसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके पोस्ट के ऊपर कोई नहीं है, वो भी तो किसी के अंडर में ही है ना प्रभु। तो अगर बड़ों को लगे कि ये जो व्यक्ति है वो कहीं पर गलत कर रहे हैं, तो ये दायित्व भी बनता है, ये बड़ों का कृपा है कि उस व्यक्ति को जिसको पद मिला है उसका व्यवहार वो ठीक से नहीं कर रहा है, तो उसको सावधानी बरतने के लिए उसको समझाना। इसलिए न्याय के हिसाब से बताया जाता है साम दाम भेद और दंड। तो उसको पहले बुलाइए, उसको बताइए कि आपको पोस्ट मिला है सेवा करने के लिए। हाँ, आप जो बोल रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कोई भी इस काम में अगर आप देखेंगे, कोई भी व्यक्ति किसी से परे नहीं है सब किसी के तत्वाधीन है। तो अगर किसी का व्यवहार और उसका आचरण अगर सिर्फ पद के लिए दाम्भिक हो गया है या गर्व हो गया है, तो उसके जो बड़े हैं उनसे बात करना चाहिए। और बात करके, जैसे भागवतम में कथा आता है ना, वेण का वेण, राजा वेण बहुत, हाँ, तो उसको तो पोस्ट था, बहुत अत्याचारी था, तो ब्राह्मण लोग जो थे उसको सबक सिखाया। इसलिए बहुत जो बड़े होते हैं वो करुणा से उनको समझाते हैं। लेकिन ये ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए, या पद ऐसा कोई नहीं पद है, खास करके इस्कॉन में ऐसा कोई पद नहीं जो सबसे पड़े। यहाँ तक कि कोई भी हो आध्यात्मिक जगत के जो हम लोग वासी हैं, मतलब इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, इसमें
ये बहुत ही विशेष एक नियम हम लोग पालन करते हैं। इसलिए कहीं पर भी अगर लगे कि यहाँ पर कोई व्यक्ति जो व्यवहार अच्छा नहीं है तो उसको हम लोग समझा सकते हैं। पहले से समझाइए अपने हिसाब से, वो नहीं हो रहा है कि बड़ों को रख के उनको समझाइए, उसमें से नहीं हो रहा है कि उनको थोड़ा दंड देना पड़ेगा ऐसे करके उनको समझाया जाता है, वो भी कृपा है। अच्छा, वो लेकिन भी महाभारत में बताया जाता है कि हर व्यक्ति का एक एक दायित्व रहता है। हर व्यक्ति का एक दायित्व रहता है। तो जैसे किसी को पद मिला तो उस पद में हमको उनके पास जाके बोलना चाहिए जिनका बात वो सुनेंगे और जो उनको समझा पाएंगे और जो उस दायित्व में है। अगर हम उनको बोलने जाएंगे तो वो शायद हमसे हमारा बात सुनेंगे नहीं या समझने का कोशिश नहीं करेंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जब युधिष्ठिर महाराज वो युद्ध करने के लिए मना कर देते हैं तो व्यासदेव स्वयं आते हैं उनको समझाने के लिए, और व्यासदेव उनको एक कहानी सुनाते हैं। वो दो ब्राह्मणों का कहानी सुनाते हैं, बड़ा भाई या छोटा भाई। बड़ा भाई के बगीचे में छोटा भाई ब्राह्मण उसने चोरी किया। तो बड़ा भाई उस छोटे भाई को बोला कि तुम राजा के पास जाके दंड लो। तो राजा जब सुना कि फलाना फलाना ब्राह्मण जो है उनके राज्य में बहुत ही विशेष है, तो वो बोलते हैं कि वो तो इतने विद्वान है, वही तो तुमको सजा दे सकते थे तुम्हारे लिए, वो मेरे पास क्यों भेजे हैं? लेकिन वो मेरे पास भेजे हैं तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुमने ब्राह्मण का अपमान किया है और ब्राह्मण हो कि किसी के घर पे, अपने घर पे ही चुराया है, तो तुम्हारा जो दो हाथ है उसको हम काट देंगे। ये लेकिन आज के जमाने में मत करना है, ये सुनिए पहले पूरा बात। तो का हाथ कट गया, वो आ गए। तो जैसे उन्होंने देखा कि हाथ कट गया तो बड़े भाई के पास आए, ब्राह्मण देवता के पास। तो ब्राह्मण देवता उनको बोले बहुत अच्छा हुआ है कि तुमको दंड मिला, क्योंकि बाद में तुमको पश्चाताप नहीं होगा, क्योंकि तुमको शास्ति मिल गया, तुम शुद्ध हो गए, अभी आओ मेरे पास। और वो जाके क्या करते हैं, एक कुंड में उनको नहा के जैसे ही मंत्र देते हैं उनका हाथ फिर से आ जाता है। अरे तो फिर वो छोटा भाई जो है वो बोलता है, भैया आप ही मेरा हाथ काट सकते थे, दंड दे सकते थे, तो आपने क्यों मेरे को राजा के पास भेजा और आप ही मेरे को हाथ दिलवा दिए? तो फिर उन्होंने कहा कि ब्राह्मण का हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए होता है और क्षत्रिय का धर्म होता है दंड देना, क्योंकि वो राज्यभार संभाल रहा है। इसलिए उसका कार्य वो करेगा, मेरा कार्य मैं करूंगा। इसलिए जैसे आपने जो आपका साक्षात्कार में जो बोले उसमें दो ही हल है। एक है कि जो उससे भी परे है उसके पास जाके उसके बारे में बताना ताकि उस व्यक्ति का अच्छा हो। और दूसरा चीज, कभी भी अगर हमको लगे कि ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, मैंने बोल दिया, उसके बाद और दिल में कुछ नहीं रखना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए कि मैंने अपना कर्तव्य कर दिया और अभी बाकी बड़े समझेंगे। या आप भी मेरे से बड़े हैं प्रभु, मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, आप मेरे को सिखा के देख रहे हैं कि मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं, मेरे को चेक कर रहे हैं लग रहा है। धन्यवाद। एनी अदर क्वेश्चन यू हैव, एनीवन हैज? Anshuman Prabhu, unmute yourself. Yes, सबका वीडियो, सबका कहाँ है अंशुमान जी? ये प्रभु जी हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। ये मेरे बेटी का राध्या 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 राध्या, यस Unmute यस yourself. राध्या, हरे कृष्णा। thank you for the lovely class. I have a question. What would happen if we don't remember our position? I can't hear you. Can you repeat, please? Okay. What will happen if we don't remember our position? Oh, position of what? Being Krishna's servant or position of being the king of this world? Which position you are talking about? I'm talking about being the king of the world. If we remember about that, what will happen? See, the what do you call?
शाश्वत, शाश्वत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? Eternal. Eternal. The eternal position of any living entity is that he is a servant of the Lord. And the eternal position of Krishna is Bhaktaram Jagatapasam Sarvaloko Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam Gyaptamam Shanti Vritsati. You are very small. I don't know how much you will understand. I will try my level best to make you understand in my own way. It's a very tough situation that you have created by asking this question. Let me try. So basically, you know, in scripture says, two personalities are always unhappy. First, the person who thinks that he will satisfy everyone. And the second person is who thinks everybody understands me or everybody will understand me. So this is not possible, humanly not possible. Because only Krishna understands everyone, and Krishna can reciprocate with a person individually to make them happy. So when one person becomes a king and if he thinks that I am the doer, this is not going to make him happy externally and internally both. I will tell you a story about this. There was a king, and the king always wanted that his people should be happy. So he made a rule in his country. Whatever people will say, before that, they have to laugh. Ha 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 ha. How much is the cost of potatoes? Ha 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 ha. The potatoes are 10 dinar, dharam, 10 dharam. Ha ha ha. It is too much. And ha ha ha. Get lost. Anyone will tell anything, they have to laugh a lot and then have to speak. Then what happened? The king broke his leg. And then the doctor came and doctor said, ha ha ha, he broke your leg. And king said that, why you're laughing? Then he said, you only made a rule that everybody has to laugh whatever they say in this country. So the rule changed. Everybody has to cry before they say anything. So what is the value of potatoes? And in this way, the country was going on. And then later, the king got a son. And the minister comes and said, ooh, you got a son. Then the king said that, why you are crying? It's a happy news. Then he said that, well, you made a rule in your country that everybody has to cry. So you understand, Radhya, even if you are a king, even if you are a queen, even if you are a princess, I am sure you're the princess of your father and mother. However, we cannot be happy unless and until we understand that we are connected to Krishna. And when we love Krishna, we will be happy internally and externally. Does it answer your question? Yes. Yes, thank you. I'm so honored and relaxed now. Thank you, Prabhu. Thanks a lot. Yes. Radhya, thank you so much. You're picking up a lot of Krishna consciousness so fast. My God, I used to always see you like a baby, and now you're asking so dynamic questions. Great. You're welcome. Really. I also want to know Bhakti Shastri. My God, this is too much. Any other question anybody is having? Okay, Prabhu, I just want to check. There was a devotee asking me about a particular question. What happened was he was having a lot of impediments, issues with his family, jobs. I mean, continuously, one after another, Though he was practicing Krishna consciousness very seriously and doing a lot of seva, etc. And of course, as he was from the South Indian side, I had asked him to meet His Holiness Bhanu Sahib Maharaj. And the instruction he got from him was to check whether he had done some Vaishnava Aparad somewhere. But to his knowledge, of course, he didn't remember. And then Maharaj suggested that he should do a Narasimha Homa in Ahobalam. So, which this devotee did. But later, of course, I think he remembered hurting somebody who was not a devotee at that time, but later he became a devotee.
Okay. And so he was asking me this question that does this affect like that, and how is it connected to our karma, and does it become an impediment later? Yeah, it's very much evident in the Bhagavatam only. Hmm. You see, Suruchi and Suniti, you remember the pastime of Dhruva Maharaj, Yes. and Suruchi offended Dhruva Maharaj when he was not a devotee. And when he became a devotee, it became an aparad. And that's why the son died in the fight with the gods and goddesses. I think, if I rightly remember, Yakshas. Yakshas. And the mother Suruchi died in the forest fire. That's the power of, offending a Vaishnava. And we need to be very careful. We don't know who will be a Vaishnava. That's why there is a song. হইয়াবেন হবেন যত মহাপ্রভুর গণ ঘুমেতে পড়িয়া বন্ধ তাদেরও চরণ হইয়াবেন, whoever will be devotees of Mahaprabhu. And I offer obeisances to them also. Now you tell me, any person, Yadu, Madhu, Sham, who is walking in your Sham days or Damodar days, and if you are a little bit fighting and he becomes a Bhakti Vriksha member later part. So that's why Bhaktivinoda Thakur says a very nice, what do you call, song, one song, that সকলে সম্মান করিতে শকুতি দিওনাথ যথাযথ তবে তো গাইব হরিনাম সুখে অপরাধ হবে হত. So my dear Lord, give me the power of worshipping and respecting everyone. See, I have can I say something? Sure. One of my thoughts or my maybe little experience. You see, at least minimum one thing we need to do is respect. And yes, you may respect people, you may not have trust. That's a different thing. That's a different topic itself. Respect and trust is different in my understanding, whatever I have understood. However, at least respect must be there towards everyone. Even ants, even any animals, anyone, they are all Krishna's energy. That's why Vidya Vinaya Sampanne Brahmane Gavi Hastini Sunichena Sapakecha Pandita Samadarshina. So this is Krishna's words, and it's actually we need to be very careful. Sometimes we don't give so much respect to all those who comes with the sannyasis or Prabhupada disciples or preachers or seniors. We need to be very careful. Ramanujacharya sent one of his servants to go to a village where he is about to come and tell all the villagers that I am coming. So in that village there are two disciples Ramanuja had. One is very rich and one is poor. The rich man started arranging programs for Ramanujacharya. And the poor disciple, he received that brahmachari who came with the news of Guru Maharaj is coming. He took care of him very nicely. And then Ramanujacharya went to that poor, in a sense, the devotee who took care of that another devotee. So this is very important in our, we have to be very sensitive. Many times we're not sensitive. We are not, we go in the flow. We make a lot of programs, big festivals, but every person must be touched. Prabhupada is something, what Prabhupada did in a Bauri. Prabhupada touched everybody's heart. Correct. Prabhupada, is so kind, so compassionate. Even recently, I was hearing one beautiful pastime of Srila Jayapataka Swami Guru Maharaj. He was in the hospital and he cannot speak after his, I think liver transplantation. He was, and they made A, B, C, D, E, F, G and everything. And then he was trying to make the other devotees, to understand what he is speaking. And after, I think, 30 minutes of struggle, Guru Maharaj just wanted to tell one thing, that give this nurse chanting gigs. She is interested in chanting Hare Krishna Mahamantra. This is like compassion.
And we have to be very, very careful that we should be very respectful towards everyone who comes to our society. Okay. There is I one think a more. lot of questions are coming. Yeah. I just want to also clarify one doubt. Some devotees keep on asking, so I thought it is the best point to clarify, as you are also there. There are cases practically like, the devotees also treat their parents with a little bit of disrespect, in a sense, like, they're very casual about it, and they may give some replies and hurt. Of course, the parents are hurt, but they forgive their children. And sometimes even the children tell the parents that, why did you bring me to this world? Some questions are also like that. So the parents feel offended, they are devotees. So, they don't want to now make sure that the children are not into a Vaishnava path. So would that be also like, taken into that level, or will it be just walk through it? These are practical questions I get sometimes. You see, for 1 month, in our ISKCON altars, or in all Gaudiya Vaishnava altars, 2 personalities stays in month of Damodar. Yeah. Which is this deity? Yashoda and Krishna. Yeah. And Krishna always respected his parents, whether it is Vasudev or Devaki, or whether it is Yashoda and Nanda Baba. So as Vaishnavas, Vittal Dev appeared in Maharashtra, being happy with the devotee who took care of his parents. So we all have responsibilities towards everyone. It starts with parents, children, up to Guru, and then up to Shri Radha and Krishna. Every level we are responsible. Prabhupada wanted a devotee is a perfect gentleman. And who is a gentleman? Bhadralok. In Bengali said Bhadralok. So who is a perfect gentleman? Who respects? The minimum thing that we can offer to everyone is respect. Parents are worshipable. I know sometimes it's difficult, and I also felt difficulty, but we cannot be harsh towards them. They are the person, they brought us here, and we are practicing Krishna consciousness. This is my understanding. And with love, we can change hearts, not by force. At least that happened with me. My father is a doctor. My mother was a nutritionist. She passed away in 2002. And now my father is an initiated devotee of ISKCON and Brahmin initiated also. He was not so much favorable. However, by Krishna's mercy and by all of your blessings, he is a devotee. And he's more sincere than me, actually. Because sometimes I may sleep in Mangalarati because I'm tired, I got late, coming from, traveling from Dubai, Haribol. And I'm not coming for Mangalarati. My father every day goes for Mangalarati. So we have to be very much respectful. What to say about, what you call parents. We need to be respectful to whoever whom we are taking help. Mahaprabhu was so merciful towards Dukhi, who is giving and arranging and helping the domestic help for Srivas Thakur's family. And Mahaprabhu said, not today, from today onwards, you are not Dukhi, you are Sukhi. Really? You are not a sorrow person, you are a happy person. Mahaprabhu says, Srivas Thakur, even the dog of your house is worshipable from me. Okay. You see, Shivananda Sen, he gave so much money just for the dog to cross in the car, in the boat. And Mahaprabhu fed that dog the coconut pulp, and the dog went back to the spiritual world in front of everyone by holding, by showing his Narayan form. So we are in ISKCON, we have cows, they will, there are so many instances in Vrindavan, in New Talpan, that, cows are, they are very special. The dogs, nearby, they chant. There is a nice book of Janananda Maharaj, Animals in Krishna Consciousness. You can, if you read that, because who don't know who are they?
So we need to be very much respectful towards our parents. Krishna will be very happy. That is our duty. Thank you, It is a Prabhuji. duty. Thank you so Prahlad much. Maharaj was asked by Nishingadev, what do you want? I want to give you a boon. You know what is the boon that he asked? Bhagavatam says. He just said, liberate my father. After getting so much torture. Great. Thank you. Okay, Prabhu. I think Vrindavan Gopal Prabhu wants Yeah, to ask a question. there was one more question before him. That is Gaurangi Mataji. She was the first. So let her ask first, then I'll take to now. Gaurangi Mataji, unmute yourself first quickly, please. Can You I load- say? Can I see them? Prabhu, Hare Krishna. Actually, I didn't have a question. Hare Krishna. Yes, I can see you. You're walking. Sorry, Prabhu. Thank you. Wonderful class. I always admire your class and take all your instructions to my heart and practice them. I just wanted to say for the first question that Prabhu had asked, that we don't know who will become a Vaishnava in the future. So I had so many experience, like a person whom I used to keep calling, please come for the program, please come for the program, but they used to run away. But now they have become such wonderful devotees that serving the Lord so nicely in Mayapur. They are, what to say, they are on the top. They are top Vaishnavas now. I'm so happy to hear your experience. Your smiling lotus-like face. Thank you so much. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Thank you. Hari Thank you. Bol, Hari Bol. Okay. Yes, Vrindavan Gopal Prabhu. Go ahead. Lower your hand. हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने बहुत अच्छे से आज समझाया अपनी पोजीशन को धर्म के अनुसार यूज करना, है ना, अपनी पोजीशन को धर्म के अनुसार। और आपने बहुत अच्छे से समझाया बच्चे को बच्चे की तरह, आपने बहुत अच्छे से पोजीशन का ध्यान रखा, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मेरा प्रश्न मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ प्रभु जी आपसे, तो थोड़ा सा इस क्लास से, इस कक्षा से थोड़ा सा हटके है। हमारी चर्चा पिछले हफ्ते भगवत गीता पे हो रही थी और अभी युद्ध भी चल रहा है एक जगह, यूक्रेन और रशिया में, और प्रभुपाद जी ने बहुत बार इसको अंकित किया है कि हम शरीर नहीं है इसी हिसाब से, और हमारी जो लाइन ऑफ कंट्रोल्स और ये सब लाइंस हैं, बॉर्डर्स हैं, ये नहीं है, इसी वजह से युद्ध होते हैं। और हम शरीर नहीं है, यदि हम शरीर समझते हैं तो हम मटेरियल वर्ल्ड में अपने आप को रखते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं रखते हैं। ठीक है प्रभु जी, बताइए। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है कि सारे शास्त्रों में, सभी शास्त्रों में, इवन वेद से लेके और भगवत गीता तक, वर्ण भी भगवान ने बनाए, आश्रम भी भगवान ने बनाए, योग भी भगवान ने बनाए, गुण भी भगवान ने बनाए, मार्ग भी भगवान ने बनाए, और ये सब अंकित किया शास्त्रों में वेद व्यास महाराज ने। अब हम, यदि मैं ये कहूं, किसी के घर जाके अपनी पत्नी को लेके जाता हूं कि ये मेरी पत्नी है, तो मैं कैसे उसको वहां पे पोजीशन पे रखूं? मान लो मैं किसी मटेरियल वर्ल्ड के या कोई आध्यात्मिकता में नहीं है, तो मैं उसके घर जाता हूं और मैं अपनी पत्नी को संबोधित करूं कि ये मेरी पत्नी है, तो मैं, चलो सोच लीजिए मैं भी थोड़ा सा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ गया, मतलब दाने की बराबर, सरसों के दाने की बराबर। तो मैंने समझ लिया कि भाई मैं, प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं शरीर नहीं हूं और ये मेरी पत्नी नहीं। जब तक आप पत्नी, और प्रहलाद महाराज ने भी अंकित किया है इसको कि आप जब तक अपने शरीर को शरीर समझेंगे तब तक जो है आप मटेरियल वर्ल्ड में हैं। अब बताइए, यदि मैं अपनी पत्नी को किसी के घर पे लेके जाता हूं तो मैं क्या कहूं कि ये मेरी पत्नी है? कैसे उसको अंकित करूं?
आपका प्रश्न तो काफी विस्तारित था, लेकिन ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ उत्तर देने का। दो धर्म होता है एक व्यक्ति का। जी। एक है शाश्वत धर्म। शाश्वत धर्म है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, वो सबके लिए है। और एक धर्म होता है वर्ण और आश्रम के हिसाब से। वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और आश्रम है ब्रह्मचर्य गारस्थ वानप्रस्थ सन्यास, ये भी कृष्ण ने दिया है। शाश्वत धर्म वृंदावन गोपाल प्रभु सबका सेम है, लेकिन स्थान काल और परिस्थिति के हिसाब से और अपना पसंद के अनुसार, हाँ, जो परिस्थितियों के भीतर हम लोग रहते हैं उसके हिसाब से एक व्यक्ति का नित्य नैमित्तिक धर्म होता है। जैसे ब्रह्मचारी है, उसका धर्म है कि वो स्त्रियों को मात्र माँ संबोधित करें, उनको जो गुरु ने कहा, जो बड़ों ने कहा उसको सुन के रहे और वैसा ही सेवा करते रहे। वैसे ही गृहस्थ का भी धर्म, जैसे आप गृहस्थ हैं, आप गृहस्थ हैं राइट जी। और आप गृहस्थ हैं, तो आपका धर्म है अपने पत्नी को पत्नी के हिसाब से बोलना, क्योंकि वो आश्रम और वर्ण के हिसाब से है। सो दैट इज करेक्ट, और ये भगवान ने ही बना के दिया है। और जैसे आप बोल रहे थे ना, और एक चीज है, तो ये है मेरा उत्तर। इज इट ओके, यू अंडरस्टूड? यस यस। और मेरा एक कमेंट है आपके ऊपर, जो कमेंट मतलब जो आपने कहा कि जो युद्ध होता है उसके बारे में, ये जो परिस्थितियों का सामना, या आप 2 साल जो कोविड भी चला प्रभु, ये सब का कारण अगर आप भगवत गीता 3.13 पढ़ेंगे ना, उसमें परपोर्ट में प्रभुपाद जी बताते हैं, भूंजते जो हम खाते हैं आहार अगर शुद्ध नहीं हो तो ये समस्या होता है जो पृथ्वी में हो रहा है। अगर हम भगवत प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं और भगवान को समर्पित चीज को ग्रहण नहीं करते हैं, तो ये असुविधा होता है सारा संसार में। खास करके प्रभुपाद जी उसकी में बोलते हैं 3.13, प्लीज पढ़िएगा। उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि सारा समस्या का एक ही जड़ है, दया नहीं है, दया चला गया है शरीर से। और वो दया न्यूनतम मात्रा में जीव के भीतर आता है जब वो शाकाहारी, मिनिमम ही बिकम्स अ वेजिटेरियन। हालांकि कृष्णटेरियन होना चाहिए। हम लोग कृष्ण को समर्पित करके जो प्रसाद ग्रहण करते हैं उसको ही सबसे बड़ा कृपा है। इसलिए जब तक हम लोग मनुष्य क्यों सफर करते हैं, क्योंकि एक है पर्सनल सेंसिटिफिकेशन एंड वन इज what do you call extended sanctification. रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं भक्ति रस, सॉरी, उपदेशामृत में। तो वैसा ही सिन भी जो है, पाप भी जो है, वो व्यक्तिगत कभी कभी होता है, और क्या बोलते हैं उसको, सबको लेके भी एक पूरा ह्यूमन सोसाइटी को लेके एक पाप होता है। तो आप देखिए कहाँ पर कौन सी देश में कोई कुछ खाया और हम लोग हाथ धोए ही जा रहे हैं, धोए ही जा रहे हैं, धोए ही जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं और मनुष्यों से ये अपराध हुआ है। So it's something like that. I appreciate your question. Thank you. Hare Krishna. थैंक यू। Any other question? धन्यवाद, Yeah. धन्यवाद। One more is there from Priya, Bhaktin Priya. Can you ask the question, or you can unmute yourself and ask the question? There's 2 more questions actually. One is from Dinu Prabhu also, but before that, there's a question by Priya Rani. Yeah, where is Priya Rani Mataji? Hare Krishna Prabhu. Can I see you? Yes. Because कभी कभी Zoom को ऑन करके हम लोग सो भी जाते हैं वीडियो को। Yes, tell me, Priya Rani Mataji. Hare Krishna. I'll ask the question in Bengali. হ্যাঁ হ্যাঁ, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু বাংলা কি সবাই বুঝবে সে বিষয়ে তো আমার সন্দেহ আছে। এটা আমার পার্সোনাল কোশ্চেন, সো মেবি লাইক দ্যাটস ওয়াই। কিন্তু পার্সোনাল কোশ্চেন তো তাহলে সবার কোনো অসুবিধা নেই তো, সবাই শুনলে? ইয়েস ইয়েস প্রভু, আমি অলরেডি চার্টে ইংলিশে লেখা হয়েছে, আমি বাংলাতে জিজ্ঞেস করব। প্রভু, আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে, যদি কোনো ডিভোটিস ভক্ত আমাদেরকে যদি লাইক থ্রু এনি অ্যাকশনস অর ওয়ার্ডস যদি হার্ট করে,
senior junior jarai ho, and then we feel bad because human nature, right? And like we try to explain and everything, but still otar poreo jodi still that misunderstanding remains, and then after that of course we have to be respectful to everyone irrespective of anything, but তখন কি হয় যে আমরা যে যে আন্তরিকতা আছে তা আমরা like we cannot maintain that, like we cannot always think good about that. So ওইটা কি বৈষ্ণব অপরাধ হয়? আর যদি ওইটা হয়, so how do we overcome that? Oh, Rupa Sanatan Goswami, can I speak in English? You understand, yes, right? yes Prabhu, yes Prabhu. So I hope everybody have understood her question. So basically, Sanatan Goswami says a very good example. He says, if there is a thorn in your leg, you need another thorn to remove it. कांटा को निकालना होता है कांटे से. Similarly, if you have offended someone or somebody have offended you, it is better that you directly deal with it. That is best. You can take an appointment, you can talk to them, what happened, is there any problem, can you tell me why you behave like that? That is best. If it is not possible, because both of have egos, okay, so then you bring one person who is you both of them respect that person. That's like a mediator, and you listen to that person whatever they say. Now you cannot do that also, then it is better to have a respectful distance. It is called respectful distance, because otherwise there will be bewilderment, and that is the reason why Sri Chaitanya Mahaprabhu has asked all of us to be very careful when we are going to the dham and trying to associate with the dhamvasis, because what they can do we cannot imitate, and sometimes they may behave in such a way that it creates bewilderment in your mind. That's why it is better to have a distance. So however, it is very, very difficult to understand human natures, but as Vaishnavas, if we are trying to become Vaishnavas, we all try to understand our faults first. Let us be introspective. Sometimes we feel he has done wrong. I will tell you a pastime. When in Shiva Sangan, the milk drinking brahmachari was entered by Srivas Thakur, thinking that he does lot of austerities, and he is having the quality to enter Mahaprabhu's kirtan, but Mahaprabhu was not enjoying the kirtan of that day, that night. So Mahaprabhu said, I am not enjoying today, maybe someone is there who is not meant to be here. Now अगर हमारे बीच में ऐसा हो तो हम क्या करेंगे? हम दूसरों को देखेंगे, तुम है ना, तुम है, निकलो, तुम है, तुम्हारे लिए महाप्रभु को हो नहीं रहा है. But the devotees of Shiva Sangha, they never did that. Every single person was pained, because every single person was thinking, because of me Mahaprabhu is not enjoying. That's the difference between the spiritual personalities and us. When we put one finger towards the other person, 3 fingers looks towards us. Hey, so then you are going here, one person is up, Krishna is seeing, and one person you are showing, and 3 persons are showing you. So in these cases, we need to be introspective. If you want to be a Krishna lover, definitely we are not Yudhishthir Maharaj that always will be forgiving, but at last he had to fight also. There is a limit. Now these things, these realizations comes, Mataji, from our chanting. This invocations of a heart and changing heart comes from our association, reading Srimad Bhagavatam.
taking darshan of the Lord and visiting Dham, Sadhu Sangha, Nam Kirtan, Bhagavata Shravan, Mathura Vas, Srimurtir, Shraddhai Sevan. সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ কৃষ্ণ প্রেম জন্মা এই পাঁচের অল্প সঙ্গ every day if one person does these five things a little bit his heart will be transformed. Then whoever says anything, it does not matter. We will follow the footsteps of Shiva. Har Har Mahadev. So much his father-in-law was speaking against him and he was just calm and quiet. क्या फर्क पड़ता है जगत के लोग तो कुछ बोलेंगे ये कुछ बोलेंगे वो कुछ बोलेंगे. So it depends on our level. The best is you talk directly. Sorry, I'm having a misunderstanding. Can you clarify me why you did that? Okay, that person is not ready. Okay, you try to approach with a common respectable person whom both of you understand and respect. That is not possible. Have a distance. Pray for them and let us be more focused in our Krishna consciousness and give a nice feast. Hare Krishna. If you feel that somewhere you have done something wrong. And Ultradanga will be the nice place to sponsor. Hare Krishna, Hare Bol. I'm just kidding. So this is my answer. This is my answer. I hope it's okay. And whatever I have learned from my superiors. Thank you, Priyarani Mataji. All the best. Thank you, Prabhu. Dina Prabhu has got a question. Dina Prabhu, go ahead. Dina Prabhu. Hare Krishna Prabhu, Dandavad Pranams. Can I get your darshan? Yes. Dinu Damodaran Prabhu. Yes. Hare Krishna Prabhu. Prabhu, this question is about the Maryada Vratikrama that Prabhupada was speaking in the Bhagavatam. When all the senior devotees are present in the assembly, so how to judge who is the senior most? That means to say, in terms of ashram, in terms of age, or in terms of the number of years in the Krishna consciousness, or so because it is also a Vaishnava approach that if a junior is trying to transgress the senior, so it is not a good thing. So how do we judge who is the senior in this case? If you ask me, don't judge anyone who is senior and who is junior. Just love everyone and respect everyone. You don't know who they are, even if your son whom you are holding. We don't know who they are. Our daughter, you don't know who they are. Why to think who is senior, who is junior? It is my understanding. Just respect everyone and be friendly with everyone, be loving to everyone. Whoever comes to your family, treat them nicely. And why to ask who is kisko pehle aarti dikhayenge? Just forget it. Give everyone. Actually, in our temple in Calcutta, what we have done, unless and until Prabhupada disciples are there, very senior that you can understand, and we go to the singer first. Whoever is singing, usko pehle aarti dikhate hain. And one thing you said correctly, that there is a sloka of Chanakya Pandit, if you can find it, among the powerful people in assembly of powerful people, who is most powerful, he is worshipped. And in age wise, briddhas, elderly people should be worshipped. In a knowledgeable person's place, even if a boy is very knowledgeable, he should be respected. There is a sloka like that. However, just respect everyone, things becomes easier. Now you will ask, how many years you are in Krishna consciousness? Whose disciple you are? Okay. Very senior guru's senior disciple you are. Okay, then let me give you a merry-go-round garland. Okay, how many years you are in Krishna consciousness? Okay, whose disciple? Oh, you're very young sannyasi's disciple. Okay, you take a Rajnigandha garland. अरे ऐसा नहीं चलता है बाबा, it's not possible. I'm just, I hope you don't mind. I'm just giving example. I'm not pulling your leg. Even if I'm pulling your leg, I will get your dust. Hari bol. And that's okay.
we have grihasthas, we have brahmacharis, we have sannyasis, vanaprasis in our society, in others, Vaishnava societies also. So we need to love and respect everyone. However, we have to be very careful whom we associate and get influenced. That is very important. So that is very important. You can associate with everyone, you can respect everyone, but be careful whom you are taking. In today's world, there are so many things going on in the internet, so many things going on in the acha log class dete hain, this and that and some other thing. And that also, as I said, that Mataji, that respected Mataji who asked, I think Rita or someone, as I was telling, we all need to be introspective, and we need to be very, very careful about our chanting, about our book reading, about our services to the deities and Vaishnavas. When we have that, Prabhu, Prabhu, Krishna will give you the intelligence to understand things as they are. Tesam satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogantam yena mamu prajanam. It's very important for all of us to understand. If we are very much dedicated towards the mission of Srila Prabhupada and following the instructions, you will be getting that intelligence, the divine intelligence, and where you will understand as things are. Right? Like Hanuman, Sugriv never gave respect to Lakshman, but Hanuman always gave. That's why when the first time Sugriv was bitten by Bali, Ramchandra said, Bali said, why didn't you, why didn't you, save me from Bali? So then Ramchandra said that, I didn't see any difference between you and Bali. So Acharya says, he didn't see any difference because he is also Aparadi, Bali, offender, and Sugriv is also an offender because he never respected Lakshman, the Adi Guru. Then Ramchandra arranged, okay, you take blessing of, I will, give you a garland. Now you wear that garland because you are twins. And Lakshman, you give the garland. So whenever he was going to wear that Lakshman's, Lakshman is holding that garland, okay. And then, you have to bow down. So in that way, he respected Lakshman, and Ramchandra was very happy. And then, so these are the things, makes us, at the end of the day, we all need to be very close to the Lord. There is a saying, Prabhupada used to say in Bengali, Bhajan karo, sadhan karo, morte janle hoy. We may do so many things. We may do this preaching, this singing, that singing, nice cooking, nice Rath Yatra, nice programs, Ultradanga inauguration, Prabhupada Janamsthan inauguration, everything you can do. However, if you are not loving Krishna and his devotees, what is the use? So we all need to be introspective. And we should not forget that the ultimate thing is that milk that is coming as devotion. You have a baby, right? She creates problem when she is going to drink milk, right? Or eat. And you make so many bahanas, Okay, the moon is coming, open your mouth, this and that, and then drink. So all the other external things will go on in our life. But real milk is this 5. Sadhu Sangha, Nam Kirtan, Bhagavata Shravan, Mathura Vas, Srimurti, Shraddhya, Seva. These 5 things, if you are intensifying this, then you will understand everything as they are. Premanjana Sarita Bhakti Vilochana. Okay, Dinu Prabhu, I hope it's okay. Yes, Govinda Prabhu. Prabhuji wanted to ask something. Govinda Prabhuji, please unmute yourself. Hare Krishna. Yes. Yes, Hare Krishna. Ananga Mohan Prabhu, please accept my most humble obeisance. Humble obeisances, Prabhu. How are you? You gave a jhalak darshan and then you again went back. Hare Krishna. No, Prabhu, thank you very much. I wish one day we get to the platform of whatever your instructions are by Guru, by your blessings and all the Vaishnavas' blessing, we get to that stage. It is not my instruction, Prabhu. This is Not my instruction.
my some thoughts and some reading, some realizations I am sharing with all my God brothers and all of you. You are my family. You all love me and I respect you all. We are a family, so I'm just sharing. Thank you, I'm not Prabhu. We hope we imbibe that this opportunity, everyone in the forum is able to get and grasp and ग्रहण करके अंदर तक घुसना है ना, नहीं तो इधर से ये कान से सुन के ये कान से नहीं जाने का है. For this also we need to be fortunate, otherwise we can keep hearing this for years together, and if it doesn't sink in our heart and application नहीं होते तो फिर फायदा नहीं है. तो उसके लिए प्लीज कृपया करके आप आपका आशीर्वाद मुझे पहले देना जरूरी. ये दूसरी मेरा प्रश्न नहीं है. I request you to put that quotation what you gave on Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's sloka. If there is a quotation, if there is a link, please put that in the chat group, or so that we are able to. Okay, recording में तो होएगा. Please, if you can just होगा. Please type it off, or if you can just give us that reference, so we are able to meditate on that. I will say. I'll get it on WhatsApp. Actually, we were doing for last 8 years some research work on Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur intensely because of the inauguration of this place. Just wait, I will show you. I will show you the terrace. Yeah, please. I hope the net works there. Please bear with me. Jai. This is yes. This is the terrace. Wow. And this is the place where Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur met Srila Prabhupada. Jai Hari Bol. Krishna, Jai Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai ho. Amazing. Namayom Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktisiddhanta Saraswati Namine Shivarshobhanavi Devi Daitaya Kripabhai Krishna Sambandha Vijnana Daine Prabhave Namaha Ancha Kalpatarubhasya Kripa Sandhabha Evacha Patitanang Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So you are watching the same place where 100 years back Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur implanted the seed of ISKCON, seed of devotion in the heart of Abhay Babu. And he spreads the message. I am sitting here and praying for all of you. I will try. I don't know whether net will work or not. This is his personal room. I hope the net is there because it's very low. I can't take. This is his room. I don't know whether you can see him or not. Yes, we can. It's not going actually. And this is the courtyard. Wow. Prabhupada would have climbed staircase. Yes. And this is the this is his toilet, and the green color is the British time gas line pipe still there maintained. So this is the place that we got in ISKCON. This is your place. You are all representing this place. Hari. Jai. The same wall, we have kept it as it is. We are going to open with the end of this month for everyone. This is the same terrace. I can't take it downstairs because we don't have the strong internet downstairs. Okay. But this is the same. I'm keeping it for 2 minutes. You can all pray to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. And I'm going away for 2 minutes. I'm just putting it here. And all the Vaishnavas and Vaishnavis, all of you can pray for your preaching success there. I'm keeping it here. Now you can all pray. Hari Jai. Kripa Sindhu Bevacha Pidam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prashaya Bhutale Srimati Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Riti Nami. You know the pranam mantra, Shri Varshavanavi Devi. Anybody knows by heart?
while we take the Daitaya Kitabdaye Krishna Sambandha. That one. Krishna Sambandha Vijnana. Daine Prabhave Namaha. So I will read and other devotees can just meditate on this until Prabhu comes. I will say and you can all repeat. There are many devotees. So if it's okay, you can all say as after I say. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Saraswati Iti Namine Sri Varshavanavi Devi Sri Vashvanavi Devi Daitaya Kripabdaye Daitaya Kripadaye Krishna Sambandha Vijnana Daine Prabhave Namaha. Daine Prabhave Namaha. You can Manasikam in the mentally, you can offer flowers to the lotus feet of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur here. Let us say it 3 times. Nama Yeah, Om do Vishnu that. Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktisiddhanta Saraswati Namine Srimati Bhaktisiddhanta Saraswati Namine Sri Varshabhanani Devi Daitaya Sri Varshabhanavi Devi Kripadhaye De Daitaya Prabhu Daitaya Kripabdaye Daitaya Kripadhaye Daitaya Kripabdaye Krishna Sambandha Vijnana Krishna Sambandha Vijnana Daine Prabhave Namaha. Daine Prabhave Namaha. Esha Pushpanjali. Thank you, Prabhu. Thank you, Radhabha Prabhu. Hari Hari. Okay. Thank I you. Yeah, This is a real blessing and we have a hope. We have a hope now. I think, I'm not thinking, I'm sure that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur loves you all. He said that today online class is going, I want to give them darshan. Bring them. Hari Hari. Oh, he inspired for all of you. You are all doing wonderful services there. Thank Wonderful you. services. Prabhu, we would like to also pray 3 times for the recovery of Dayaram Prabhuji's good health. I know he's struggling still in Mira Temple and Mataji is there with him. So we like to all pray for him before we start. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dayaram Prabhuji is very dear to us. He has done so much for ISKCON and for Guru Maharaj is so deeply always loving him so much. And I have my personal relationship with him from my childhood days. So he's very dear to all of us and such a wonderful devotee. So we request Narasimhadev to keep him protected always and get him back to the service of Gurudev as soon as possible. Thank you. Hare Krishna. So thank you very much for allowing me to serve you all. Very happy to see. I can see a lot of devotees and seniors here. My obeisances to all of you. Many videos are switched off. So no, they're all now. I can see. No. Okay. Harish Prabhu is also there. Gopkumar Prabhu is there. I know many of them. Yeah, actually, it's a great pleasure. Prabhuji, what happens, the bandwidth becomes a little weak when you keep the videos on. So, if I'm India, when you're speaking, so that's the reason they keep it off. Not because... Yeah. I have full faith that they don't sleep. They are hearing me. Okay, please come sometimes to Turanga Junction Road. It is getting more and more beautiful and wonderful. It's a 40 years tapasya. But 30% work is still pending, and then the Lord will come, Krishna willing, very soon. Small Radha Krishna deities which were there, during his time, and Gauranga Mahaprabhu later, hopefully, Krishna willing. And devotees are praying here. Devotees are, doing their best. And please pray and keep us also in your prayers. Thank you very much, Radha
Prabhu, for engaging me, and thank you all the Vaishnavas and Vaishnavis. You are very inspirational in my life also. It is so difficult to preach in the West, in a country like, where you are on. But it's Sri Guru's mercy and Prabhupada and Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's mercy that you are all preaching so nicely. And I know you will do more. And may Krishna protect all of us and engage always in his lotus feet. Jai Jagannath. Hare Krishna. Thank you, Ananga Prabhuji. Thank you for the wonderful class. Very nice realizations. I'm sure a lot of devotees will pick up a lot of practical points from your class and instructions and guidance. And we look forward. It has been difficult to get you. Actually, whenever I call, they are saying that you are engrossed in some research work in the ISKCON Research Center. I don't know what you're doing all that is. No, because of this Ultradanga junction now, we were very busy actually. Yeah, I know. Very busy. But you all should come from Shamdes. All of you should come. And please, there is a lot of space. You will be very happy. आपको बहुत अच्छा लगेगा. मैं आपका अपेक्षा कर रहा हूँ. आइए जल्दी. Sure, we'll do that. Thank you again. Thank you. Please give me the permission for leaving, and you can continue. Hare Krishna. Thank you very much. Some announcements. First of all, I request prayers for all Prabhupada disciples. There are many who are actually not in good health. Some of them have